अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान बशीर। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट 4 फ्रॉम बुक 2। सो लेट्स रीड इट आउट। देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टर्न टू पेज नंबर 27। Say the names aloud of the given pictures and match them to their corresponding letter patterns. Dear students, हर तस्वीर को उसके लेटर पैटर्न के साथ अटैच करना है। So first one is bat, bat. So fourth sound is AT, bat. Second picture is of fan, fan. So last sound is AN, fan. Third picture is of tap, tap. So second sound is AP, tap. Fourth picture is of pen, pen. So first sound is EN, ten. Fifth picture is of dustbin, bin, bin. So third sound is IN, bin. Last picture is of sun, sun. So fifth sound is of UN, sun. Next is make two more words with the given letters pattern. Make two more words with the given letter patterns. Dear students, letter patterns दिए गए हैं और इनसे मजीद दो अल्फाज आपने क्रिएट करने हैं। लाइक कैट, एट, कैट, बैट, रैट। एन, मैन, फैन, बैन। एड, डैड, बैड, मैड। ऐप, कैप, मैप, टैप। Next is conversation corner. Read aloud the given dialogue and learn about formal expressions. Teacher, Assalamu alaikum class, how are you all today? Students, wa alaikum assalam, we are all fine. How are you? Teacher, I am doing well too, thank you for asking. Today we will learn about how to speak politely. Can anyone give me an example? Student 1, we should say excuse me before asking for any favor. Teacher, very good. That is a polite way to ask for something. Dear students, इसमें हमने देखा कि एक स्टूडेंट और टीचर का आपस में मुकालमा है और टीचर ने कहा है कि किस तरह से पोलाइट अंदाज से एक दूसरे से बात की जा सकती है। स्टूडेंट कहता है कि हमें कोई भी बात या कोई भी फेवर लेने से पहले कहना चाहिए एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस लर्न अबाउट फॉर्मल जेस्चर्स व्हाइल स्पीकिंग टू समवन। हमने फॉर्मल जेस्चर्स सीखने हैं किसी से भी बात करने से पहले, यानी कि किसी से भी मुखातिब होने से पहले क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम आशिर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ इज योर हेल्थ? आई एम गुड टू, नाइस टू हियर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि कितने खूबसूरत अंदाज से दो लोगों ने आपस में बात की। नाउ टर्न टू पेज नंबर 28. लेट मी हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओह, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं और एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए जेस्चर इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ उन्होंने आपस में मुकालमा किया। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ सन एंड मदर। हैव अ नाइस डे। दिस इज वेरी पोलाइट जेस्चर। वालदा अपने बेटे को कह रही है कि हैव अ नाइस डे। सो नेक्स्ट पोर्शन इज ऑफ vocabulary and grammar. Words in action. Fill in the missing letters to complete the words. Dear students, हमारे पास यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे लेटर्स मिसिंग है, तो हम इसमें लेटर्स पुट करके अल्फाज को पूरा करेंगे। SURPRISE, सरप्राइज। FLOOR, फ्लोर। RESPECT, रिस्पेक्ट। PUNCTUAL, punctual. ATTENTIVELY, attentively. Next is read the given examples to learn about compound words. Adjective plus noun. Dear students, हमने compound words की exercise पहले भी देखी। अब देखते हैं कि इन examples में compound words कैसे create किए गए हैं। Keep in mind, a compound word formed by combining an adjective and a noun has an adjective that describes the noun. हम यहाँ पे एक adjective और noun को combine करके compound word बनाएंगे। So first example is blue, blue is adjective, berry, berry is noun. So compound word is blueberry. Second is green, green is adjective,
House is a noun. So we can say greenhouse. Third one is soft, that is adjective, and ball is a noun. So we can say soft ball. Dear students, let's turn to page 29. Break down each given compound word into its adjective and noun parts. Dear students, यहाँ पे compound words दिए गए हैं और इनमें एक adjective है और एक noun है. हमने दोनों को separate करना है. Red wood, red is adjective, wood is noun. Sweet heart, sweet is adjective, heart is noun. Highway, high is adjective, way is noun. Whiteboard, white is adjective, board is noun. Grandparent, grand is adjective, parent is a noun. High chair, high is adjective and chair is a noun. That's right. Now the next portion is of grammar. Read the rules for the use of articles a and the and choose the correct one for the given sentences. Dear students, हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, a, an और the. इन आर्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू द करेक्ट यूज हमने सेंटेंसेस में पुट करना है. ए कहां पे इस्तेमाल होता है? वी यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. फॉर एग्जांपल अ कैट, वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होते हैं उनके साथ ए इस्तेमाल किया जाता है. एन, वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वाउल साउंड. वो वर्ड्स जो वाउल साउंड के साथ शुरू होंगे उनसे पहले हम एन इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एन आंट. दी, वी यूज दी व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन. जब किसी खास नाउन को रेफर किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, तो हम उससे पहले दी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल. So here are the examples. So here are the statements. First one is I saw dash rabbit. Rabbit. Dear students, चूंकि rabbit consonant से शुरू हो रहा है तो हम यहां पे पुट करेंगे a. I saw a rabbit. Dash teacher is kind. The teacher is kind. The teacher is kind. चूंकि teacher को specify किया जा रहा है. Third one is we went to the park yesterday. We went to the park yesterday क्योंकि जगह को स्पेसिफाई किया जा रहा है. He bought an apple क्योंकि apple वाउल साउंड के साथ शुरू हो रहा है तो हम पुट करेंगे an. He bought an apple. The last one is a dog is running fast. चूंकि dog consonant से शुरू हो रहा है तो हम लिखेंगे a dog is running fast. Keep in mind we use a और an to show singularity. हम किसी भी सिंगल चीज को शो करने के लिए a और an का इस्तेमाल करते हैं. Dear students, let's turn to page 30. Look at the pictures and write the correct article. Dear students, पिक्चर के हिसाब से और इनके नाम के साउंड्स के हिसाब से हमने a, an या the को पुट करना है. So first one is an orange. Second one is a flower. Third one is a sheep. Fourth one is an umbrella. Fifth one is a bus. And the last one is a uniform. Writing portion. Write a few sentences about your experience at school. Dear students, here you need the guideline of your teacher. आप अपने टीचर से गाइडलाइन लेंगे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे. Keep in mind the opening sentence tells the reader what the paragraph or text will be about. यहाँ पे हमारे पास 2 पोर्शन है. एन ओपनिंग सेंटेंस जिसमें आप बताएंगे कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं. एडिशनल इंफॉर्मेशन और सपोर्टिंग डिटेल्स हैं जो आप डिटेल्स आगे शेयर करेंगे. फन टाइम. ड्रॉ एनी टू थिंग्स ऑब्जेक्ट्स यू फाइंड इन योर क्लासरूम इन योर नोटबुक. डियर स्टूडेंट्स, आपने 2 चीजें जो अपनी क्लासरूम में नोटिस की हैं उनको यहाँ पे ड्रॉ करना है और उनको खूबसूरत सा कलर अप करना है. So this was all about the exercise of this chapter. जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा इसमें बड़ी खूबसूरत बातें थी कि क्लासरूम के अंदर कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है. उम्मीद है आपको इसके टेक्स्ट की भी समझ आ गई होगी. एक्सरसाइज को भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया. नई वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.